Started my YouTube channel, and I am Vanya, as you all know. And today it's a cooking special. We are going to make buttermilk. For making buttermilk, we are going to need a few ingredients like curd, and we are going to need some mint and coriander leaves. We are also going to need a spoon, and the most exacting part, a tissue paper. Then we need a what? Then we need a what? We need water. And why I'm doing that? Then we need a plate. Then we need some hing. We need some adrak, ginger. We'll separate it from the big bowl which we are going to use to whisk everything. The buttermilk. So first we are going to open the curd. So much pressure. Open. Oh. 3, 2, 1. Is it open? No, it didn't. Oh, why? Can it be faster? Finally open. It's open right now. Then we just put half a cup of curd in the bowl. I'm just measuring it that way only because that's 1 cup, full cup. And I'm putting half of it in the bowl. Yeah, we'll put it aside and then we'll whisk it with a whisk. Need a creamy consistency, and then we pour water. So first let's make a creamy consistency. I would like to add some points to the buttermilk, as it's a lot of summer and it's really hot. It helps you to build your immune system. It fights heat in this hot summer. Like, it's really hot, dude. Like in Mumbai it was 40 degrees yesterday. In Nagpur it was 47 and Delhi 42. What's going on, dude? Now we whisk. Now we'll add 3 cups of water. If you think that's a 4, I was doing like this, out of camera, so that's it. I'm doing out of camera. Now we'll whisk, add some water, 1 cup, then we'll whisk. Now here's the second cup and the third cup. We'll whisk. Sorry. Excited. I love buttermilk so much. Now there should be no, it's a fluid consistency. Please stop when you are happy with your consistency. You can also blend the curd and put some water, then blend it and add some ginger in it, and then blend and added some more curd and I put in fast moves to get whisk really slow. So here's the consistency which we want. You can see this is the consistency, and you need to whisk it for, I think so, 2 minutes, basically 1 to 2 minutes. Now we'll add hing. Please comment down below what we said in English. Hing को क्या बुलाते हैं English में? So I'm measuring like a pinch only. Yeah, I don't want my hands to get dirty because the color comes out really easy. So I'm just changing the cap, and then it will give you a little yellowish color, but that's totally normal. Let's whisk it more. Whisk. So yeah, you can see it's totally blended for 30 seconds. You have to mix for that. So I'm just saying some song while that. Then we put it away. Sorry, not bowl. The hing away. And now we are going to add the master ingredient, which is अदरक. आप अदरक को हम मतलब ऐसे ही डाल सकते हो आप, या तो उसका फ्लेवर कम चाहिए तो आप क्रश करके डालो, ऐसे क्या पीस के डालो उसको, या तो आप ब्लेंडर में कर रहे हो तो उसको जब आप वो बना लो तो उसमें अदरक डाल के वापस ब्लेंड करो तो एकदम अदरक का द पीसेस
will be gone, there will be just taste. तो blend कर लिया अभी मैंने, ये देखिए, देख सकते हैं blend हो चुका है ये मैं आपको बस एक एक्शन दे रही हूँ कि ओहो इट्स डन। और अभी हम मिंट लीव डालने वाले हैं उसमें। अब आप मिंट और कोरिएंडर लीव दोनों डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मिंट लीव डाल रही हूँ, मेरे पास कोरिएंडर लीव भी हैं, बट मुझे मिंट ज़्यादा अच्छा लगता है बटर मिल्क में। अगर आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर चाहिए मिंट का आपके उसमें, तो आप एक चीज़ करिए, आप अपने हैंड में मिंट लीजिए और टेस्ट से क्लैप करिए तो निचोड़ी, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट फ्लेवर मिले। तो मैं बहुत सारा वो डालूँगी मिंट, तो क्योंकि मुझे मिंट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा। तो देख सकते हैं मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है कि मैंने बहुत सारा मिंट डाली, वो नीचे चला गया है। अब मैं और मिंट डाल दूँ, आप देख ही सकते हैं मुझे मिंट इतना पसंद है। तो आप उनसे आप बोलेंगे कल्पना वान्या सर नहीं मिंट ज़्यादा। तो ऐसे जोक्स भी बनाने अच्छे लगते हैं मुझे, बीच बीच में हम उसको विस्क करते रहेंगे अच्छे से। अब देख सकते हो कि वो अच्छे से विस्क हो चुका है। अब हम इसमें और थोड़ा डालेंगे, विस्क करेंगे। बेसिकली आपकी बटर मिल्क तैयार है। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, पर इसमें चीनी मत डालिएगा। चीनी और चाट मसाला चलेगा नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट करना था वो भी कर सकते हैं। तो यस, अभी मेरे कैमरा की कैपेसिटी फुल हो रही है मुझे लगता है, बट आई थिंक तो ये 1-2 मिनट और कर सकते हैं। तो मैं आपको कप में डाले हुए नहीं दिखा सकती, मुझे कप लेने जाना पड़ेगा, और तब तक आई थिंक तो कैपेसिटी इसकी फुल हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कितना स्लीक बने, इट्स डिलीशियस। मैंने टेस्ट करके देखा अभी, यार मैंने चम्मच लिया था, टेस्ट किया था, सॉरी मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको बोलूं। बट थैंक यू एवरीवन मेरे चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी बजा देना। तो आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, क्योंकि अगले वीक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। वरना अगर आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि डल गई वीडियो या नहीं। चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको पता है हिंदी में बटर मिल्क को छाछ बुलाते हैं और बिहार में इसको मट्ठा बुलाते हैं। थैंक यू।